So functional analysis revision class number 5. So गला क्लास रे हमें ये हॉर्न-वार्नक थ्योरम इतर consequences यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल क्लोज ग्राफ थ्योरम और ओपन मैपिंग थ्योरम इमानक स्टेटमेंट को हमें प्रिसाइजली देखितला और एग्जाम रे केन टाइप रो पढ़ी पारे ताकू बेस्ट करी कि हमें लीनियर फंक्शनल रो केतरा एग्जांपल करथला। सो एबे ई क्लास रे हमें ए डुअल स्पेस ता देखमा स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल duals of LP capital LP in a weak convergence reflexivity ई जिनिस देखमा और नेक्स्ट क्लास रे हमें हिल्बर्ट स्पेस कन्वर्ट करिके कवर करिके हमर फंक्शनल एनालिसिस को सरबले ट्राई करमा। सो डुअल स्पेस को जीवा आगरो कते गुडे थ्योरम थिला जेंटा हम आगरो प्रूफ नै करतला काना इफ x is a Banach space then the algebraic dimension of x is either finite or greater than equal to c. So कोई जगह ना x यदि Banach space हला then dimension of x either कहीं तो बा finite है तो बा और यदि infinite हला ये कहीं तो must be greater than c. There is no in between बोले dimension of x के तले भी अंगो आलिप नॉट नहीं हुए इधर हमें से स्टेटमेंट करी पड़े ना इन्हें जस्ट सिंपल प्रूफ टे प्रूफ करना हमें गला क्लास रे देखितला क्लोज सबस्पेस of Banach space are nowhere dense ए जिनिस देखतला आउ जतले यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल पढुतला सेतर आगरो हमें का देखतला दे बेयर कैटेगरी थ्योरम अच्छा एटा ओपन मैपिंग को बेयर कैटेगरी थ्योरम। सो बेयर कैटेगरी थ्योरम का कहतला a complete matrix space cannot be written as countable union of nowhere density ई जिनिसटा कहतला बेयर कैटेगरी थ्योरम। तो ई स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करिके ई जिनिसटा को प्रूफ करबा जे डायमेंशन डा फाइनाइट हला किछ काम नै यदि इनफाइनाइट हला देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कंटिन्यूम। सो हमें कहला ना सपोज डायमेंशन ऑफ x इज आलिफ नॉट सो बुक रे ई तरीका रे आलिफ नॉट देथेसी सो जे नोटेशन यूज करछ आलिफ नॉट और केतरा बुक ई तरह के भी यूज करसन आलिफ नॉट। सो लेट बी basis gluten ala himal basis x1 x2 up to xn then it a infinite basis te so let xn be the linear combination of finite set जेहेतु हमें हिमाल infinite set रे linear independence check केली करतला finite set that every finite subset is linear independent similar way रे एता गोटे जन finite subset यूज करला x1 x2 xn this is a गाना close काहे लगे since this is a finite dimension n दा छै finite dimension non space n जेहेतु so closed and proper subsets of x so due to closeness and proper subsets of x it is गाना हमें का कह पालना nowhere dense the previous class से देखितला स्टेटमेंट जे closed and proper subsets of a Banach space is nowhere dense and ई हिसाब रे हमें x को देले हमरा x is the countable union of xn where xn is closed and proper so proper nowhere dense that is x टा को हम दीजिए complete so बाकी हमें बेयर कैटेगरी थ्योरम काम करतला a complete space cannot be written as countable union of nowhere dense so इटा स्टेटमेंट ना जन हमें कहला जन जेहेतु हमें ना आलिफ नॉट नै की ई जिनिसटा जन कहला लिखि पारो छु countable union करी की which is a contradiction to the Bayer category theorem since x is a Banach space and x is complete and countable union of not nowhere dense closed subset of x which is a contradiction to the Bayer category theorem. So ई हिसाब रे हमें जानि थला C01 is a Banach space so आगरो भी कहितले dimension of C01 केतेला और continuum 2 to the power alif naught similar way dimension of LP देखि परमा C हेबा similar way dimension of L infinity also C kindly these are all Banach spaces or all are infinite Banach spaces so in Banach spaces हमें का कह पारमा C01 isomorphic to LP ई जिनिसटा कह पारमा आउ आकु आउ केतरा स्टेटमेंट होले देखमा अच्छा इने भी कवर करछे जे L infinity टा algebraically isomorphic हवा to a infinite Banach space केन तरीका रे देखो so group theory जिंदे हमें कहतला जे every group or finite group is contained in
some subset of Sn either का हमें कहतला every group is contained in some symmetry group ई जगह भी हिंदी कोई पढ़ला बाकी ने finite यूज करतला ई जगह हिंदी if X is a infinite dimensional Banach space X तो जेहेतु ये उड़ा Banach space and dimension of X कहला infinite बोले either greater than equal to C then X contain a vector space that is algebraically isomorphic to L infinity then X पाखरे उड़ा vector space अच्छे Y which is a subset of X such that Y कहवा algebraically isomorphic to L infinity so ये isomorphism कना हमें कहूतला जंती हमें जेतले ग्रुप थ्योरी पढ़तला कि linear algebra करतला isomorphic बोले कहा तला 1 on 2 homomorphism और homomorphism को स्पेशली कहाँ कहतला this is the operation preserving ये कहाँ कहतला operation को preserve करतला so similar definition यूज करमा this preserve the norm जे norm preserve करवा ताको हमें कहमा आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म और ई तरीका रे कहि परमा d of tx ty is equal to d of xy इटा भी डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिज्म और ई वे रे कहला if x and y are norm linear space then a linear map t from x to y is called isometrically isomorphism if it preserves the norm that is norm of tx आउ ई norm टा किने y सेट रो छे is equal to कहला norm of x आउ ई norm टा छे x सेट रे for all x belongs to x and t is bijective 1 on 2 so 1 on 2 homomorphism कहतला इना में homomorphism अगर यूज करला the preservance of norm or distance preserve करला ई वे रे हम डिफाइन करि परमा आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म इता को बेस्ट करिकि प्रीवियस ईयर ले गुटे गुटे क्वेश्चन पढी जे प्रीवियस ईयर सॉल्व करछ देखिथबो सो नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है if x is a separable Banach space then x is isometrically isomorphic to a subspace of L infinity so x टा उडे Banach space which is separable then x is isometrically isomorphic to y which is a subset of L infinity रो उडे सबसेट संगे isometrically isomorphism पाइमा so इजन ई जुड़ा स्टेटमेंट कहले इटा और इटा ये दुटा हम लगे इंपोर्टेंट स्टेटमेंट पहले इटा डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत रेयर आइसी बाकी क्वेश्चन आइसी तो L infinity स्पेस टा हम लगे इंपोर्टेंट नेक्स्ट असला डुअल स्पेस सो इन फर्स्ट में डुअल स्पेस होते फर्स्ट के हमको अलजेब्रिक डुअल कहबार थला अलजेब्रिक डुअल अच्छा सो डुअल स्पेस का देसन डुअल स्पेस काना if x is a norm space x टा काना norm space हला then collection of all bounded linear functional from x f defined from x to f collection of all bounded linear functional is called the dual space so हम norm space को परे आसमा अगर फर्स्ट की वेक्टर स्पेस से डील करो x टा को हम आर्बिट्रली वेक्टर स्पेस नला सो ये वेक्टर स्पेस रे हमें यदि collection of all bounded linear functional on vector space यदि वेक्टर स्पेस रे पर्टिकुलर खोजला ताको हम कहमा algebraic dual आ इने यदि वेक्टर स्पेस नाही कि norm space हेगला ताको हम कह देना dual space एथि डेफिनेशन एथि डिफरेंस algebraic हम यूज करथला फॉर वेक्टर स्पेस आ खाली dual यूज करथला फॉर नॉर्मल स्पेस सिमिलरली आ नोटेशन दोथला algebraic dual नोटेशन दोथला x star और dual space को दोथला x bar x dash similarly it dual space रो dual को algebraic dual of this dual space x star और x star इधर बोलना algebraic reflexive और यदि इन पर्टिकुलरली x टा में वेक्टर स्पेस रू नॉर्म स्पेस को देई दला तो नोटेशन दोतना x डबल डैश x dash रो डैश दिस इज द इदा हम कहू कना रिफ्लेक्सिव स्पेस
सो जेहेतु आम एबे केने अछु फंक्शनल एनालिसिस रे अछु हमर मेन काम वेक्टर स्पेस रे थी ने हमर मेन काम होला नॉन लीनियर स्पेस रे सो हम वेक्टर स्पेस रे केतरा रिजल्ट देखमा जेंडा कि नॉन लीनियर स्पेस रे भी होल्ड करछि सो ये रे कहि पालना यदि स्पेस टा x हला जनरल एलिमेंट x टाइप रो दिसछि आ वैल्यू ऑफ पॉइंट एटा पॉइंट जाको आ यदि हिंदी x डैश देखला x स्टार देखला अलजेब्रिक ड्यूअल देखला इधर एलिमेंट का हला फंक्शनल जाको f from x to f our element can this way f of x so in the x double dash e function मान collection so g the element this way g f और इधर क्या लिख पालना g f को हम डिफाइन करला g x f where जेन x टा আছে x टा हला fixed and f is the variable f belongs to the algebraic dual this one is variable so the definition based रे आंगु मन रखले ट्राई करा पड़वा सो ये रिफ्लेक्सिव स्पेस टा आसु जे कि हम डुअल टा कहि देला जे कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लाइन तो ये रिफ्लेक्सिव स्पेस टा आसला केनु ये रिफ्लेक्सिव स्पेस टा दला कि कैनोनिकल मैपिंग हम कैनोनिकल मैपिंग डिफाइन करला x to x स्टार स्टार ये रिफ्लेक्सिव को कैन रे x to gx देखला so this canonical mapping is linear also bounded एक कैनोनिकल में linear bounded plus injective so if c is surjective यदि canonical mapping surjective हला then range of c रे की आसबा पूरा complete space x star star पड़े आसबा then this x is said to be ताले x को हम कहमा algebraic reflexive so आंको ये जिनिसटा दरकार जे रेंज ऑफ द कैनोनिकल मैपिंग का हेतबा पूरा अलजेब्रिक डुअल से यदि सेम हे गला ताको हमें कहू गाना रिफ्लेक्सिव स्पेस और अलजेब्रिक रिफ्लेक्सिव नॉर्म को जतल डगमा जतल नॉर्म को कहमा सेना डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव यूज करम सो इन ओडे इंपोर्टेंट रिजल्ट लेट x be a finite dimensional vector space x would have finite dimensional vector space then dimension of x java dimension of algebraic dual java dimension of reflexive space algebraic reflexive space भी कहाँ हुआ सेम हुआ इधर प्रूफ टा बेसिक प्रूफ टा बुक को फॉलो करी परमा सो जस्ट मुई इने कहाँ करी जे थ्योरम रो हेडिंग टा देकी पळई जे बोले स्टेटमेंट देकी पळई जे प्रूफ भी सिंपल टा ई वेरे भी देखि परमा जस्ट ओवरव्यू टा दोचे let u1 u2 un be basis of x जेतो हम फाइनाइट डायमेंशनल बोल छु let dimension of x को हमें n कहला so u1 u2 n आउ f को डिफाइन कला कलेक्शन ऑफ n फंक्शनल आउ ई फंक्शनल डिफाइन करना कला f की is this is the del j की कॉर्नेकर डेल्टा फंक्शन so ई डेल्टा फंक्शन को डिफाइन कर दला so इनो हम जानला इन 1 1 1 2 मैपिंग टे क्रिएट हे जिबा आउ f को हमें कहतला गना डुअल बेसिस बोल के कहतला इधर एग्जांपल जाका हम लगे इंपोर्टेंट तो देखमा नेक्स्ट आको देखमा सो इन ओडे कोरोलरी डे और लेमा जीरो वेक्टर let x be a finite dimensional vector space and x0 belongs to x then the has the property that f of x0 is equal to 0 means f of x0 is equal to 0 for all f belongs to the dual space सो जेतकी सब अलजेब्रिक डुअल अछि समस्तकर गुटे सेम फिक्स पॉइंट रे 0 होले ताले हम का कहबला x0 0 आउट इंपोर्टेंट रिजल्ट a finite dimensional vector space is algebraically reflexive that is dimension of x star star is equal to dimension of x star is equal to dimension of x हम पछड़ देखला ना सो ई अलजेब्रिक वर्ड को उठावा लगे बोले x जेतले वेक्टर स्पेस थिला हमें ई अलजेब्रिक वर्ड टा यूज करतना सो x जेतला में नॉर्म स्पेस को जंप मारमा आ ये अलजेब्रिक वर्ड छड़ दे के खाली जन डुअल स्पेस तला इन खाली हमें डुअल स्पेस कहमा सो डुअल स्पेस नोटेशन दला x डैश आ इन नोटेशन दोतना x स्टार और x डैश ये दुटा समान जाय खाली नॉर्म स्पेस रे वेक्टर स्पेस रे कता एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करूची सो x डैश टा कहला हमर x डैश इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड linear functional आ हम एटा पढितला प्रीवियस क्लास रे ई जिनिसटा उडा कहला बानाक स्पेस फॉर्म करसे कहली f टा r और c ये कहला
itself ଗୋଟେ complete set ହେବେ so collection of all bounded linear functional ଆଉ ଇନେ norm କେମିତି define करतला x dash रे x dash जेहेतु हम functional मानकर collection करजो x to f so इने functional number norm define करमा operator norm f is equal to supremum of x belongs to x not equal to 0 mod fx by norm x और ये definition भी यूज करना supremum of norm x is equal to 1 f of x और ये definition भी यूज कर परमा supremum of norm x less than 1 f of x ये तीनटा तो इक्विवेलेंट ना तो जेन डेफिनेशन मन पाइला से डेफिनेशन हम कहि पारमा और ने f टा चूज करछु दिस कुड बी आइदर आवर रियल और complex which is complete in itself so collection of all bounded linear functional is a norm linear space if y is a Banach space এটা থিওরাম পড়িতলা so ইনে যেহেতু r और c দেইছে মানে itself complete so ইজেন x dash ta this x dash is a Banach space so x dash of a norm space is always a Banach space whether x is or x Banach space हो कि ना हो इजन f लगे ई रिजल्ट हम प्रीवियस क्लास रे पढ़ितला the p of xy उडे Banach space हवा if and only if y is a Banach space इतार एग्जांपल भी हमें देखितला केनता ना हवा कहि C00 रोडे नहीं की नेक्स्ट आउट इंपोर्टेंट रिजल्ट जेंटा के हम यूज करसु इजटा the dual space of x dash is a norm of a norm space x is separable then x is itself separable बोले यदि x dash separable होजे then x should be separable एटा necessary condition यदि dual separable होजे x भी separable हेबा आ कथा हला इपटू को कन्वर्स को जिवाले हमको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दरकार देथि प्यारे करन स्टेटमेंट x dash सेपरेबल x सेपरेबल भी परमा बाकी x सेपरेबल हेले x dash नारे हम किछि कहि नै परमा तरे फाइनाइट डायमेंशनल दरकार सो फॉर एग्जांपल यदि rn रो देखमा rn रो डुअल स्पेस की हैला rn ने अलजेब्रिक डुअल को यार वेक्टर लिखले भी चलवा नॉर्मल डुअल कले भी चलवा सिमिलरली lp स्पेस रहला lp star is equal to lq where 1 by p 1 by q is equal to 1 इतर प्रूफ भी बेसिक प्रूफ टा वो ग्रुप फॉलो करी हवा मैं फिलहाल प्रूफ इने कवर नहीं करवा सिमिलरली इने जन p टा कहू छु lp रो p टा कंडीशन ला 1 to p2 infinity 1 to p2 infinity so in case of 1 तले l1 हला so l1 रो डुअल स्पेस हला l infinity L1 space रहला L infinity बाकी converse not true बोले ये जिनिसटा कहूजे L infinity स्टार रहला not true काहे लगी L1 टा कना उडे सेपरेबल स्पेस सो जे डुअल टा सेपरेबल होजे देन सेट इटसेल्फ सेपरेबल होगा था L infinity भी हमको सेपरेबल दरकार बाकी L infinity तो सेपरेबल न है हमें जानि छु ई रिजल्ट यूज करके एटा ई जिनिसटा जे जेदे डुअल स्पेस सेपरेबल हो जे ताले x भी सेपरेबल होगा सो इन डुअल स्पेस जेतु l1 हो जो हमें l1 l infinity रो सो ये सेपरेबल है सो l infinity भी सेपरेबल बाकी हमें पढ़ी जो l infinity is not separable it cannot be represented countable union of dense subsets ई तरीका रे सो l infinity रो डुअल not equal to l1 नेक्स्ट ने आउडे इंपोर्टेंट रिजल्ट जेंडा इटा करसो इटा जे C0 रो डुअल हला L1 एंड C स्टार रो भी हला L1 अब C0 C टा कना सीक्वेंस ऑफ ऑल कन्वर्जेंस जत की सब कन्वर्जेंस सीक्वेंस और C0 हला कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू 0 सीक्वेंस ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 0 ई जिनिसटा कहतला सो इना आउडे इंपोर्टेंट रिजल्ट हमको दरकार बोले जेंडा सिखला ई एग्जांपल लो ये एग्जांपल लो कहां सिखला इफ x and y are Banach space एटा भी जानछु जे c0 और c विथ रिस्पेक्ट टू सुप नाम ए दुटा गणा Banach space एटा फर्स्ट क्लास रे हम ऑलरेडी डिस्कशन करियो आछू सो कोचे इफ x and y are Banach space
such that their algebraic dual or their dual spaces are equivalent. Then question utla, is it possible that the sets are isomorphic? Simply no. Kindly in a example hello करूँ. C0 star है L1, C star है भी L1, algebraic dual है L1, बाकी C0 is not isomorphic to C, but C0 is not isomorphic to C. Similar way रे हमें dual space of LP देखी परमा, which is LQ होगा, और condition हला 1 by P plus 1 by Q is equal to 1 होता था. और simply इन्हें इटा भी कहा था L infinity रा star अंकु not equal to L1 01. So इटा कितना basic example of कना reflexive space. Next example of dual space. इटा this is dual space. तो अपना हमें reflexive space को jump मारना. So reflexive space सने जंते algebraic reflexive space पढ़ोतना सने कहाँ होतला पूरा canonical mapping होतला x to x double star और map करतला x को g of x को ये जैसे onto हो जाऊतला r of c टांग को onto मिलतला ताला हमें कोतला this is algebraic reflexive. Simply in a extra vector space हमें होतला ये vector space को हमें ते norm space से replace करतला ताला हमें ताको in general को जुगाना the reflexive space. Another definition purely दो ही जनकर समान. So a norm space X is said to be reflexive if R of C is the X double dash, where C defined from X to X double dash is the canonical mapping, and this C is linear and continuous and 1 1. ये तीनटा जिन्नी समय कोई परमा about the canonical mapping. So कितना example और कितना result related to reflexive space. So first asla, if a norm space X is reflexive, then it is complete. X यदि reflexive हला, imply X is a Banach space. That is X is complete. Converse in general, not true. आंको बहुत सा example मिली जवा, वो example लाई book फॉलो करो, मुझे इन example देने. और converse true कितना है इसी? Converse is true if and only if वाला condition कितना hold है इसी, जितने x टाइम और कहाँ है तब वो finite dimensional norm linear space है तो आज इजी नहीं चले both way hold करवा. For example, Rn is reflexive. In case of finite dimensional, every finite dimensional norm space is reflexive. Reflexive है complete Banach space और Banach space ले तो finite dimension में चे every finite dimensional norm space आरगना complete, hence Banach space तो इपॉट सपोर्ट हवा लगी बोले both side u हवा लगी हमको finiteness दरकार. अवगत रहा example, this LP is reflexive. LP 1p less than infinity, this is reflexive. L1 is not reflexive. इन L1 को जो ये reflexive नहीं कहीं लगी L1 का जितना dual रखना L1 और dual को L infinity मिलवा और L1 हला separable and L infinity is not separable. और हमें result पढ़ना जिस separable space has a dual if and only if it has reflexive space if and only if its dual is separable. Just aqua Kennedy पढ़ना. So similar वाला में एजेंस भी देखी परमा the capital LPAP set up all measurable with measurable function are reflexive और इन्हें भी condition 1 to P to infinity और इन्हें भी L1 रा जतल देखमा L1 AB इधर dual space देखमा ये भी L infinity ये भी हवा similar वाले ये separable बाकी L infinity not separable ये जिनिस हमें देखी बार में.
So for example non reflexive space किए हमारा CAB है non reflexive L1AB हमें ये दुजन का स्टैंडर्ड प्रूफ गुडे देखमा C1AB भी जनरली बुक कर देखि परमा L infinity C और C0 ये पांचटा स्पेस ले हम लगे नॉन रिफ्लेक्सिव स्पेस इटा स्टैंडर्ड एग्जांपल आउ बहुत रे एग्जिस्ट करू जा हमें ई जिनिस को मन रखले ट्राई करमा जे CAB L1AB L infinity C और C0 ये जगह ले नॉन रिफ्लेक्सिव स्पेसेस Similar way in our result proof also every Hilbert space H is reflexive जति सब Hilbert टा कना complete inner product space so complete inner product space जगह भी हमको आनला reflexive इता ଗୋଟେ standard proof करसो book follow करबो म इन proof provide नहीं करी जे यदि proof खोजु छ आराम से easily follow हो परबा so इने result हम L1 और ई L1 और L1 को देखे वाले ଗୋଟେ standard result देगा परमा a separable norm space X is with a non-separable dual space X dash cannot be reflexive means X dash मतलब X dash असला यदि X टांगो separable लीजिए और X dash आंगो non-separable मिलला then this X dash can never be reflexive ये केतले भी reflexive है ही नहीं पारे for example this L1 star L1 रो यदि हमें करना L infinity वाला हमें जाने जो L1 is separable but L infinity is not separable of L infinity और L1 रो standard proof मान में आगरू देई थी बोले LP space हो देइचे कि L infinity रो इन्हें रिवीजन रे भी नहीं देतले एटा प्रीवियस ईयर सॉल्व करता प्रीवियस ईयर एटा ऑलरेडी प्रोवाइड करथिबी सो ई वे रे हमें L1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव कोइ परमा सो आउडे इन कांसेप्ट simple basic result if X is reflexive then it is dual space is reflexive यदि X टांग reflexive होचे then dual space is also reflexive ई वे रे Next, if X is a Banach space, if and only if X dash is reflexive, मतलब ये result X गुटे Banach space अच्छे, then ये reflexive हवा, if and only if its dual is reflexive, ये तार dual टा reflexive वाला दाले जाके ये बराबर. So in our definition, total set रा, actually total set हमें पढ़सूं कहने जतले inner product space पढ़सूं से जगह पढ़सूं जेतुना next आउ केतरा एग्जांपल जेतला देबी strong convergence weak convergence रे हमें total set रो यूज टा करू छु सो total subset रो डेफिनेशन टा कहि दउ छै a total set in a norm space X is a subset M of X whose span of M जेते करना हमें this is dense in X closure of span of M या हमका मिलवा X मिलवा closure of span of F contained in X. So M is total in Y if and only if span M ro closure is equal to X. Similar way रे topological space रे भी कोई पलना a subspace T of a topological vector space X is said to be total subset of a X if linear span of T is dense in subset of X. So इधर करे span of T is also dense in X. इडा को हमें कहि परमा टोटल सेट सो एतकी थिला ऑल अबाउट हमर केनडा डुअल स्पेस आउ रिफ्लेक्सिव स्पेस एटा नॉर्म स्पेस रे काम करछु आउ जदी वेक्टर स्पेस रे काम करतला सेम जिनिसटा को ही अलजेब्रिक डुअल को खाली यूज करतना अलजेब्रिक डुअल स्पेस एंड अलजेब्रिक रिफ्लेक्सिव स्पेस So next, हमें अब strong convergence, weak convergence चढ़ जाऊँ. Strong convergence in general हमें कहाँ होता ना? Let a sequence xn in a norm space X. xn उड़ा sequence ला. Then this is said to be converges strongly to an element X belongs to X. So vector space E, norm space X को strongly converge करूँ चे if
it converges in norm, that is xn minus x tends to 0, that is limit n tends to infinity xn minus xn norm tends to 0. so जदि norm रे converge कला convergent in norm हला ताले हम कहतला strong convergent, and x is called the strong limit of xn, so we say xn converges to x strongly. ई वे कहि परमा. और सिमिलर वे रे हमें गोटे weak convergence define कला. weak convergence काना xn converges to x weakly, notation लाटा weakly if direct ये कहला ई रा कहि पलना f of xn converges to f of x for all f belongs to the dual space, that is f belongs to bounded linear functional. so for all सबु bounded linear functional यदि sequence टा xn टा x को converge कला ताको हम कहूजु ना weak convergent. A sequence xn in a norm space x is said to be weakly convergent if there is an x belongs to x such that for every f belongs to x dash dual space limit n tends to infinity f of xn f converges to f of x, and we write as xn converges to x weakly. so in a jana kalna in a jinista strong implies weak, strong convergence implies our weak convergence. इधर जो कही पड़ला strong convergence कहाँ कला xn minus x tends to 0. यदि weakly check करमा f of xn minus f of x from mod f of xn minus x कहीं लेके हमें linear functional नो जो so ये जिनिस करी परमा आओ less than mod f or norm f xn minus x रा norm ये जिनिस पे आराम से लिखी परमा. so इन्हें जन xn minus x है ये less than 0 होगा, so ये total quantity टा f of xn minus f of x tends to 0 ये रे हवा. और ये जन ये norm है पहला definition करने लिखला हमें ये जिनिस लिखते हैं tx norm of tx is less than norm of t and norm of x if t is bounded. यदि t टा बाउंडेड हला इने जैसे f टा हमर कना बाउंडेड लिनियर फंक्शनल त हम ए जिनिसटा लिखि पारु. so strong implies weak केनडा कहले this strong imply weak convergent. so इन आउ केतरा रिलेटेड थ्योरम देखि दो और लेमा let xn be a weakly convergent sequence in a norm space x, say xn converges to x weakly, then this weak limit of x is unique. Is weak limit asuche unique, and every subsequence of xn converges to weakly to x. जतकी सब इतार subsequence रहला xn k रहला this also converges weakly to x. और most important इन जन sequence टा बारुचे तर जदि norm करना norm of xn this sequence is bounded. so this sequence is bounded. so in a norm space strong implies weak with the same limit. बड़ा simple proof देखेली बाकी converse in general not true. और proof लगे तब बुक रे example follow कर बुक रे example अच्छे मैं इन्हें standard example को तर दे नहीं तेरे lengthy ही जाऊँ जितला L2 टा हम standard example मिली जब L2 रे बाकी lengthy ही जब example दे तले एक तो एवे भी class lengthy लंबू जे further लंबी हुआ तो example ले book follow करा. Our convergence केतले true होतला convergence is true if the dimension of x is finite. यदि dimension x हमको finite मिलला then weak implies strong. ये जिनिसटा भी हमें कोई परमा. so for space LP space रे कहाँ होचे हमें xn converges to x weakly if and only if इन्हें p छाड़ हमें 1 को छाड़ू दो इन्हें 1 को भी छाड़ू दो. xn converges to x weakly if the sequence first को साथ यदि जिनिसटा bounded है if and only if चला यदि norm of xn is bounded है और ई तरीका रे
for each every fix we have zeta j to the power n which converges to zeta j, that is xn converges to x coordinate wise. ई जिनिस हे परले हमें कहला जे एलपी स्पेस टा भी काला वीकली कन्वर्जेंट हे परवा. Similarly, in a norm space X, xn converges to x weakly if and only if the sequence norm of xn आउ कहाँ दरकार bounded दरकार आउ कहाँ for every element of f of a total subset m of x dash f of xn converges to f of x. इन से total set यूज करना m x dash आउ इजन f आस्चे के नवास्चे f subset of m which contain in x dash ई वेरे जदी हला इने तर each element m रो each element xn जदी f of x means weakly convert कला ताले हमें कहना xn converges to x weakly total whole set नाले भी ई second statement रो खाली implication एटा जे whole set नाही गोटे total subset रे भी हे गले हमें weak convergence imply करि जब कि कोई परमा और ये बाउंडेडनेस टा तो नेसेसरी कंडीशन और यदि कन्वर्ज कर जे ऑटोमेटिक बाउंडेड हो ए जिनिस को इफ एंड ओनली इफ वाला बाउंडेड हले वीकली कन्वर्जेंट और गोटे टोटल सेट रे भी नाही कहि पाले यदि हम गोटे ए फुल एक्स सेट रे भी नाही कहि पाले यदि तार गोटे टोटल सबसेट रे कहि पाला ताले भी हम रिजल्ट कहि पालमा. सो इन बेसिक अलजेब्रिक कतरा करसो x and y are two norm space t is a bounded linear operator from x to y, then xn converges weakly to x0, then txn converges weakly to tx0. So operator टा भी weakly converge करवा और operator convergence टा हम आपको देखमा केंदे कि weakly converge करूचे. Out and similarly xn यदि weakly converge कला x0, then limit of norm xn ये कहला is always greater than the x0 norm of x0. एटा गोटे इंपोर्टेंट रिजल्ट और एटा एक्सरसाइज रो क्वेश्चन जे प्रूफ चाहू से बुक ही फॉलो करो मोइना प्रूफ दे नै बस स्टैंडर्ड का इन द मोस्ट वेराइटी एग्जांपल भी नै दे बहुत टे. सो बुक फॉलो करबो जदी आपको एक्स्ट्रा दरकार एग्जांपल पता xn converges to x weakly, yn converges to y weakly, then xn plus yn converges to x plus y, so the alpha xn converges to alpha x weakly. So next out important result जेंडा को हमें कोई पलना xn यदि weakly x0 को convert करूचे then there exists a sequence ym of linear combination of element of xn. इन xn रो linear combination रे हमें गोटे सीक्वेंस ym कहि परमा which converges strongly to x0. yn converges to x0 strongly in norm रे हमें rearrange करी कि लिखि परमा. एटा स्टैंडर्ड प्रूफ अछि. प्रूफ लागि बुक देखो मु खाली रिजल्ट को इंपोर्टेंट तो मुझे रिजल्ट मेंशन कर दे छी. So out a similar result, if A is a subset of non-linear space, then every non-empty subset of A contains a weakly Cauchy sequence. The weakly Cauchy sequence रखले ताले हमें A is bounded. So weak Cauchy sequence यदि weakly convergent करूचे ताको हमें weakly Cauchy sequence करतना और Cauchy sequence रे definition देखि देबो ताले A टा bounded होबा. मैंने just result टा शो करूची. So next convergence of sequence of operators and functionals. then sequence of operators और functional ई जिनिसटा हमारी जन functional केस रे और sequence of operator ई थ्रू हमको एग्जाम रे 2-3टा क्वेश्चन पड़छे. बेसिकली रिजल्ट में एटा यूज करमा देन ई स्ट्रांग कन्वर्जेंस वीक कन्वर्जेंस और एलपी स्पेस एटा जन इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन ई रिजल्ट और ई रिजल्ट ई मान को ही यूज करमा. इन एक्स्ट्रा किछ नै को सेने सीक्वेंस से खोतला एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर को शिफ्ट हेमा. सो लेट x and y be norms linear space. A sequence Tn of operators काला collection of all bounded linear operators in पाउजू इनु हम गोटे sequence टे चूज करना. Then this sequence is uniform operate convergent. Uniform केतले हवा जेतले हमें ताको
normally convergent कहि पारमा if Tn converges in the norm on B of xy that is बोले norm of Tn minus T tends to 0. Similarly strong operator convergent केतो कहि पारना जेतले Tnx converges to Tx in norm U रे converges to 0 for all x belongs to x सब x लगी जदी ऑपरेटर टा स्ट्रांगली कन्वर्ज कला ताको कहमा स्ट्रांग ऑपरेटर कन्वर्जेंस बेसिकली एटा सीक्वेंस उठे उठे इने खाली ऑपरेटर नाटा यूज करूँ जेतु ऑपरेटर रो सीक्वेंस नउछु सिमिलरली वीक ऑपरेटर टोपोलॉजी इने का होगा f of tnx minus f of x ई जदी कन्वर्ज इन होला 0 को ता for each f belongs to the x dash dual space को यदि belongs कला और f belongs to b of xy ताले हमें कोतला this convergence weak operator convergence इने खाली sequence जगह हमें operator को replace कला नाले it जन ई same definition ही यूज कला this and this ये दुटा ही यूज कला इने खाली operator change कर देना so strong वाले uniform imply strong imply weak बाकी converse in general not true आउ example लगी बुक टिके देखो मुझे कवर नहीं करी कहीं लगी ई रीजन रो एग्जाम रे क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड आछे मैक्सिमम ए एग्जांपल आडको नहीं है जे तो इने प्रोवाइड नहीं करी दरकार पड़ला केने प्रीवियस ईयर देबी नेक्स्ट लिनियर फंक्शनल केस रे हम जिनिस का कहू इन सीक्वेंस डिफाइन करमा fn करी let fn be a sequence of bounded linear functional on a norm space x ई जगह रे strong convergence same definition fn minus f converges to 0 strong convergence और weak convergence लेगा fnx minus f of x this converges to 0 for all x belongs to x then fnx converges to f of x weakly and इन्हें हमें weak convergence नहीं कहेगी इन्हें हमें कहेगा weak star convergence इन star आस्ते due to functional कहले हमें dual space को लाडू x star करते लाना algebraic dual करी so definition basically same sequence space आउ operator ये दुई केस रे so sequence आउ operator ये दुई केस रे same definition यूज करना linear functional ले भी same definition यूज कर चुं बाकी weak convergence को हम notation दो चुं weak star convergence आउ result ditto to ditto एटा ही hold करोगा तो extra result हुए आउ लेखाओनी so एटा भी previous year रे cover करी जे केने उठे so मुझे सेरा direct weak convergence रो help नहीं बता देथिले तो केते जन डाउट पचरौथिले weak star convergence को केनथि weak same definition खालीटा functional भी गुटे तो boundary linear operator ना ये भी गुटे boundary linear operator same टा so एटा ला weak star convergence आउटे एबे weak topology टा भी just define कर दमा आउ इछ अच्छा केता result will mention करी छी so let Tn be the boundary linear operator x to y x is a one-arc space and y is a norm space means then x टा उडे one-arc space होचे और y टा उडे general norm space होचे then Tn is strongly operator convergent with limit t यदि Tn टा कहाँ होचे strongly converge करचे t को that is Tnx converges to t of x then isn't t टा operator is also a bounded linear operator एटा ला result strongly यदि convergent हला ताले t टा उडे bounded linear operator हवा condition काना x should be one-arc space x यदि one-arc space नहीं हुए in general आमे कोई नहीं पारूं so same type रो result सेने जंदी sequence से देखुतला इने भी a sequence of Tn of operator boundary linear operator x and y are one-arc space यदि x और y कहाँ हितिबे one-arc space हितिबे it's strong operator convergent हितबा if and only सेने जति सब हमें देखुतला सब weak convergent result देखुतला इने हम strong convergent result के देखुतो strong convergent if and only first का आसला the sequence of the norm operator ये bounded हितबा था और second वाला if and only if
tnx is kochi in y रे जदि kochi होतबा for every x in a total set m of x whole set m लेबी ना लेबी total set गुटे total set m रे जदि kochi होचे ताले हमें ताको strong operator convergent कोई परमा इने जेंडा हमें इटा कहतला काहे गला ई जगह हमें जेंडा कहत एने हम मेनली वीकली डिस्कशन करिछु आ एने बानाक स्पेस रो हेल्प नै कि स्ट्रांगली डिस तार प्रूफ भी सिंपल प्रूफ मानते एते बड़ डिफिकल्ट नै जे डिटेल्स पढले चाहू छ बुक फॉलो करबो मु जस्ट ओवरव्यू दउ छै कहले ई क्लास में एटा जन एबे कवर कर दउ छै रिवीजन करी एटा तो हंतरी जे थ्योरी क्लास करबो एटा मिनिमम 4टा 5टा क्लास लगबा एटा मनकर प्रॉब्लम हम डिस्कशन करबा लागि इवन इफ एग्जांपल डिस्कशन करबा लागि भी टाइम लगबा so a sequence fn of bounded linear functional on a Banach space is weak star convergent means fnx converges to f of x is in star ho je then limit being a bounded linear functional on x you have bounded linear functional of x if and only if ketala hi parba first কথা আসলা ये norm ro sequence ta this is bounded सब ने result टा सब ने समान टा if and only कोटा सेकेंड कथा आसला if fnx is Cauchy ये जदि Cauchy हला for every x in a total subset m और total subset रे हे गले भी हमको throughout the whole set होई पारमा आ ने गुटे important result operator norm रे norm t is less than lim of tn इस सेम जिनिस सेने होतला बाकी उल्टा तरीके होतला का होतला lim in norm xn is greater than norm of x0 if xn converges to x0 quickly सेने देखि तो एटा सेम रिजल्ट ही इने होल्ड करू छे सो इने आउट स्टैंडर्ड रिजल्ट नै तो एटा थ्योरम डेटा let x be a separable Banach space x टा उठे काला separable Banach space and m is a subset of the dual space और ये कहाँ bounded then every sequence of elements of m contains a subsequence which convergent weak star convergent to an element of x test so ये m रो पाखरे गुटे subsequence अच्छे जे कहाँ weak star ही converge हुआ to element of x test so ये बुझा पड़ी बा weak convergence आ weak star गाना फंक्शनल को असले weak star को होजु ऑपरेटर रे थिले कि सीक्वेंस रे थिले हम ताको weak convergence को होजु और ऑपरेटर टा को weak ऑपरेटर convergence को होजु सो थी थिला strong operator weak operator आउतर convergence एबे जस्ट टोपोलॉजी रे केनदे डिफाइन करछु सेटा कहि दोजु फर्स्ट norm operator topology that is norm operator topology कहाला इटा सिंपली tn minus tn tends to 0 को होजु एटाला norm operator topology ये जन topology generate करवा the smallest topology generated by this या tn जाको सब जगह आले collection of all bounded linear operator ये ताको हमें कहजु गाना strong operator topology or norm order topology or uniform operator topology same way रे हमें convergence भी define करि छ सेने पछाडे so देखि दम definition if x and y are Banach space and b xy collection of bounded linear operator और norm है define कला supremum of norm x norm ax एटा हमें इन operator को a नि जाय छै then this b xy with respect to this norm is a Banach space complete space हमें जानि छु काहे लगे this x and y are Banach space वाले खाली y रो Banach space ही necessary x रो किछि दरकार नै so this topology given by this norm is called norm topology or uniform order topology similar way रे हमें strong operator topology कहि परमा यदि anx converges to ax हला then ई माने जन topology generate करबे ताको हमें कहमा strong operator topology so an converges to a strongly if for each x belongs to x anx converges to ax सेटा पछडे पड़थला एन ऑपरेटर नॉर्म करी की स्ट्रांग ऑपरेटर करी की और टोपोलॉजी काना टोपोलॉजी रे खाली यूज करछो या ये
टोपोलॉजी टा जनरेट करवा दैट इज ए यदि हमको ax को नला ये कंटीन्यूअस हो अच्छे the smallest topology or the weakest topology on B of xy such that this f of x then function कला a को ax नो जे is continuous called the strong operator topology टाउ कमा strong operator topology similar way रे हमें weak order topology define करना इने a को f of ax रे नला so this function or dxf is the smallest topology generated केतला continuous हला तो को हम कहमा weak order topology basically topology टा और इने जन डिफाइन करला जन ऑपरेटर नॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस इज सब जगह सेम टा ही खाली जस्ट डेफिनेशन अलग अलग करिजो सो इतकी एतकी थिला हमर फर्स्ट यूनिट रो कांसेप्ट सो टिके इपट सपोर्ट जन हेतवा सने मैनेज करबो हम ऑलमोस्ट सब कवर करे ट्राई कर दे जे ये डुअल्स ऑफ एलपी weak convergence weak star conversion reflexivity so এটা first unit गला मैं second unit को next out class second unit out discussion करमा आउ सार वाले ट्राई करबी so thank you